Hello, my question is to find the largest sum contiguous subarray. For this, my brute force approach will be that I will find all the possible subarrays sum and try to find the maximum sum. For this, I am writing down the code. Let's see. So for finding the subarrays sum, I will make two loops. So let's see. Let first take a array. In this array, I will take 10 elements. I plus plus. So I have taken a loop for int I equals to 0, I is less than 10 and I plus plus, in which I take another loop for the subarrays, for finding the subarrays. Int j equals to I, which will run from I, j less than 10, j plus plus. So for this, what I will do, I will take variable sum and I am initializing sum to 0 here, so that for every run the sum gets 0. Here this will give me the sum of subarrays. I will take a max m variable and initialize it to the first element of the array, that is 1, and I will apply a condition. If sum is greater than max m, then max m equals to sum. So this will give me the maximum sum of the subarray. Let's print the result. Maximum. Let's run the program. Here we get the 13. We can observe here that we get 13 by this particular array, subarray. So इस सबैरे को फाइंड करने के लिए हम एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लेते हैं, जिसमें लेट्स टेक लेफ्ट, और इनको सबको पहले 0th इंडेक्स पर इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट इक्वल्स टू 0।
सो बेसिकली जब यहाँ पे मुझे मेरा मैक्सिमम सम मिल जाएगा तो वो तो मेरा एंड इंडेक्स हो जाएगा। तो राइट इक्वल्स टू जे। और यहाँ पे मैं एक एस वेरिएबल को ले लेता हूँ, इंट एस इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर लेफ्ट इक्वल्स टू एस। जब ये लूप स्टार्ट होगा तो इससे मेरा फर्स्ट जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स दे देगा और राइट इक्वल्स टू जे पे मुझे एंड इंडेक्स दे देगा। यहाँ पे मैंने लेफ्ट को एस असाइन किया है तो एस इक्वल्स टू आई। जिस आई के लिए ये मैक्सिमम होगा सम वो आई इसमें स्टोर हो जाएगा और वो हमारा लेफ्ट पॉइंटर बन जाएगा। तो इससे हमें सब एरे मिल जाएगा। तो इसको हम करते हैं प्रिंट लेट हम सब एरे को भी प्रिंट कर लेते हैं और आई इक्वल्स टू लेफ्ट से राइट तक। इसको रन करके देखते हैं। So here we get our largest sum subarray. Here we have used the two loops which will run throughout the array. So it will give us a time complexity of big O of n square. For the optimization, I will be using Kadeni's algorithm. In this approach, I will do linear traversal of the array and try to find out the maximum sum. For this, I will be taking sum and initializing it to 0 here, and I will do some modification. I am removing this for loop which is finding our subarray. Here now this modification gives the subarray here itself. There is if condition, if sum is greater than maximum, then maximum sum will get updated. And I will also using left and right pointers to store the starting and ending index of the subarray. For this I will be storing right equals to I and left equals to S if my sum is less than 0. Then sum gets 0 and my left pointer shift through 1.
So this is the Cadence algorithm. Let's see the output. Here we can see we get the largest sum contiguous of subarrays, that is 13, and this is the subarray 6 minus 1 5 3. This has the time complexity of O(n), as there is only one for loop. So this will give us the time complexity of big O of O(n). That's it. Thank you.